Hi guys, welcome back to my channel, or welcome if you are new. In this week's recipe, I'm going to be showing you all how I make this delicious and heartwarming meatball curry. आज की वीडियो में मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मैं ये मज़ेदार कोफ्ते का सालन कैसे बनाती हूँ। As with most foods, this meatball curry can be enjoyed all year round, but I would really recommend eating this in the winter for the best and comforting result. कोफ्ते को आप पूरे साल में एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा सर्दियों में आता है। Be sure to subscribe so that you don't miss out on any of my new videos, and if you hit the bell icon, you'll get notifications every time I upload. For the main curry, we'll be needing 1 onion which is chopped finely, 250 milliliters of oil, 2 green chilies, 1 large tomato, 450 grams of minced meat. You can use any meat that you prefer, 1 tablespoon of ginger and garlic paste, 2 eggs, as well as some fresh coriander to garnish. You'll also be needing 1/4 teaspoon of salt, 1/2 teaspoon of turmeric, 1/2 teaspoon of crushed chili, 1/3 teaspoon of red chili powder, 1/3 teaspoon of cumin seeds, 1/3 teaspoon of coriander powder, as well as water as needed. मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 1 प्याज, 250 milliliters oil, 2 सब्ज मिर्चें, 1 बड़ा टमाटर, 1 बड़ी चम्मच जिंजर और गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन और अदरक की पेस्ट, 2 अंडे और फ्रेश धनिया जिससे हम गार्निश करेंगे। मसालों में हम डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी, आधी छोटी चम्मच क्रश चिली, 1/3 छोटी चम्मच सुरख मिर्च, 1/3 छोटी चम्मच जीरा, 1/3 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और पानी भी। For the marination, we'll be needing 1/3 teaspoon of salt, 1/3 teaspoon of coriander powder, 1/2 teaspoon of crushed chili, 1/2 teaspoon of cumin powder, 1/3 teaspoon of red chili powder, 1/2 teaspoon of ginger and garlic paste, 1/2 teaspoon of green chillis, as well as 1 tablespoon of onions. मैं 450 ग्राम्स कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए 1/3 छोटी चम्मच नमक, 1/3 छोटी चम्मच खुशक धनिया का पाउडर, आधी छोटी चम्मच क्रश चिली, आधी छोटी चम्मच जीरा का पाउडर, 1/3 छोटी चम्मच सुरख मिर्च, आधी छोटी चम्मच लहसुन और अदरक की पेस्ट, आधी छोटी चम्मच सब्ज मिर्चें और 1 बड़ी चम्मच प्याज। First of all, I'm going to start off by preparing the marination. Into a large mixing bowl, I've added in all of my minced meat, into which I'm going to add in 1 tablespoon of onion, as well as some ginger and garlic paste, some green chilies, and my seasonings. सबसे पहले हम marination को तैयार करते हैं। मैंने एक बड़ा मिक्सिंग बोल लिया है और इसके अंदर मैंने सारा कीमा डाला है, 1 बड़ी चम्मच प्याज डाली है, सब्ज मिर्चें, लहसुन और अदरक की पेस्ट और मसाले भी। Now we can give this a good mix to ensure that all of the ingredients are incorporated and the meat is fully marinated. इसको अब हम ठीक तरह हिला लेते हैं कि सारे कीमे को मैरिनेट लग जाए। When shaping the meatballs, you can make these as big or as small as you want. Today I'm going for a medium size. कोफ्ते की शेप आप बड़े या छोटे रख सकते हैं। आज मैं दरमियाने साइज के बना रही हूँ। As soon as my meatballs are shaped, I'm going to fry them. जब कोफ्तों की शेप तैयार हो जाएगी, हम इनको साथ ही फ्राई कर लेते हैं। We don't want to fry these for too long, otherwise they will become dry. So all you need to do is fry them until they start turning lightly gold. इनको हमने ज़्यादा देर के लिए नहीं फ्राई करना है, इसलिए कि फिर कोफ्ते अंदर से ड्राई हो जाएंगे। जब ये गोल्डन होना शुरू हो जाएंगे, हम इनको हीट से रिमूव कर देंगे।
Now let's start working on the remainder of the curry. In a pan I've added in some oil which is now heated and now I'm going to start frying my onions. अब हम मसाला बनाना शुरू करते हैं। एक हंडी के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया और जब ये गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर प्याज को फ्राई करना शुरू करते हैं। Fry the onions until they are light gold in color. इनको हमने तब तक पकाना है जब तक ये लाइट गोल्डन हो जाएंगे। Once the onions are lightly golden, you can add in the ginger and garlic paste and give it a stir. Fry this as well for about 1 to 2 minutes. जब प्याज लाइट गोल्डन हो जाएंगे हम इसके अंदर लहसुन और अदरक की पेस्ट डाल के 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर देंगे। At this point, I'm going to add in the sliced green chillis, followed by all of our seasonings. अब मैं सब्ज मिर्चें को काट के डाल रही हूँ और मसाले भी ऐड कर रही हूँ। After frying this mixture for a minute, I'm going to add in my tomatoes which I've chopped in my chopper, but you can also do this by hand. 1 मिनट अब गुजर गया तो अब मैं टमाटर अंदर डाल रही हूँ। आज मैंने चॉपर से चॉप किया लेकिन आप हाथ से भी काट सकते हैं। If you feel that this mixture is burning, please do add in a couple tablespoons of water. अगर जरूरत पड़े आप 1-2 चम्मच पानी भी अंदर ऐड कर सकते हैं। We're going to fry this mixture for a total of 4 or 5 minutes. इस मिक्सचर को हमने तकरीबन 4 या 5 मिनट के लिए पकाना है। Once around 5 minutes have passed, we can add in our meatballs into this mixture. 5 मिनट के बाद हम अंदर कोफ्ते ऐड कर देते हैं। It's been around 4 minutes since these meatballs have been frying in this mixture, so now I'm going to add in 400 milliliters of water. The amount of water that you add depends on how thick or runny you want your curry to be. 4 मिनट अब गुजर गए तो इसके अंदर मैं 400 milliliters पानी डालने लगी हूँ, लेकिन आप ज्यादा या कम भी कर सकते हैं। Cover this with the lid and allow it to simmer until the curry reaches your desired consistency. अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको पकने देते हैं जब तक ये ठीक तरह थिक या थिन हो जाए जैसे आपको पसंद है। Once this curry is beautifully prepared, I would really recommend that you serve it along with some hard-boiled eggs and some fresh roti. मुझे कोफ्तों के साथ बॉइल्ड अंडे और फ्रेश रोटी बहुत पसंद है। So here it is guys, here is my end result. If you liked my recipe, please do give it a thumbs up and subscribe if you haven't already. Let me know in the comment section down below what you guys want to see next time. Thank you so much for watching. See you next time. Bye. तो ये देख ले हमारे कोफ्ते अब तैयार हो गए हैं। बहुत जल्दी पक गए हैं और बहुत टेस्टी भी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब मुझे ये भी पता है कि आप नेक्स्ट टाइम क्या देखना चाहते हैं। Thank you so much for watching. See you next time. Bye.